हेलो दोस्तों, नूरटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आधार बायोमेट्रिक के बारे में। आप जानते हैं असम में आधार बायोमेट्रिक का इशू बहुत दिन से चला आ रहा है, लेकिन उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसका सोल्यूशन अभी आ चुका है हमारे पास। आपको मालूम है कि असम में बहुत सारा लोगों का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना और बहुत सारा लोगों का आधार कार्ड बन गया था, क्योंकि जो लोगों का आधार बायोमेट्रिक रिजेक्ट हो गया था उन लोगों को आधार कार्ड मिल चुका है। लेकिन जो लोगों का आधार बायोमेट्रिक रिजेक्ट नहीं है वो लोग अभी तक आधार कार्ड नहीं बना पाया और उनको बहुत सारा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला है। क्या सोल्यूशन है, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाला है। चलिए वीडियो को देखते हैं। যেতিয়া ড্ৰাফ্ট এনআৰচিৰ পৰ্যায়ত আছিলে ২৭ লাখ মানুহৰ বায়োমেট্ৰিক্স তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু আমি বায়োমেট্ৰিকখিনি সংগ্ৰহ কৰোঁ। সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ১৩/৮/২০১৯ তাৰিখে এটা নিৰ্দেশ দিয়ে যে এই ডাটাবিলাকৰ সংৰক্ষণ হ'ব লাগিব আৰু সংৰক্ষণ হোৱাৰ পিছত যিসকলে এনআৰচিত নাম সোমাব তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড ঘূৰাই পাব। যিসকলৰ নাম সোমোৱা নাই ট্ৰিব্যুনেলৰ জাজমেণ্টৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ডসমূহ পাব। এই সিদ্ধান্তখিনি হোৱাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰৰ RGIয়ে এনআৰচিখন নটিফাই কৰিব লাগে যাতে নেক্সট ষ্টেপটোলৈকে আমি যাব পাৰোঁ। কিন্তু এই পৰ্যন্ত ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীখন আনুষ্ঠানিকভাৱে নটিফাই কৰা নাই। গতিকে আমি জানো যে এনআৰচি হৈ গ'ল, কিন্তু এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈ গ'ল, যিটো ফাইনেল প্ৰক্ৰিয়া য'ত নেকি এনআৰচিখন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অধ্যাদেশ বা অৰ্ডাৰত নটিফাই হ'ব লাগে, নটিফাই হোৱা নাই। যেতিয়া নটিফাই হোৱা নাই আৰু এটা লগত কৈছিলে যে তথ্যৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমাৰ যিখিনি টেকনলজি আছে সেইখিনি দি আমি তথ্যৰ নিৰাপত্তা কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তাকো আমি ভাৰত চৰকাৰক জনাইছোঁ। দুইটা বিষয় ভাৰত চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত আমি এখন কেবিনেট কমিটি গঠন কৰিছিলোঁ। কেবিনেট কমিটিখনে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত কথা পাতি আমাক এটা সিদ্ধান্ত দিছিলে যে যি মুহূৰ্তলৈকে এনআৰচিখন চূড়ান্ত নহয়, অন্তত চূড়ান্ত এনআৰচিত নাম থকা মানুহখিনিক আমি আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ ২৭ লাখ মানুহৰ ভিতৰত প্ৰায় ১৭ লাখমান মানুহে আধাৰ কাৰ্ড পোৱাৰ এটা যোগ্যতা থাকেগৈ। কিন্তু বিষয়টো যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যায়, সুপ্ৰিম কোৰ্টে আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা আবেদনকাৰীসকলক সকাহ দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দায়িত্ব দিয়ে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন অফিচ মেমৰেণ্ডাম উলিয়ায়। কিন্তু তাৰ পিছতো মই সদস্যগৰাকীৰ লগত একমত। মই দেখিছোঁ যে মানুহখিনি যিমান উপকৃত হ'ব লাগিছিল উপকৃত হোৱা নাই। মই ইমানে ক'ব পাৰোঁ যে লাহে লাহে এই বিষয়টো আমি সমাধানৰ ফালে লৈ আনি আছোঁ আৰু বিভিন্ন কথা মই সদনৰ মজিয়াত ক'ব বিচৰা নাই। কিন্তু মই ভাবোঁ যে ৰামভক্তই হওক বা যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক বা ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ যোগ্যতা আছে এই ব্যক্তিসকলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে আমি খুব তৎপৰ আৰু খুব সোনকালে এইটো সমাধান হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। কিন্তু এতিয়া যদি মোক ডিটেইলছ সোধে, ডিটেইলছ ময়ো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, কাৰণ আমাৰ বহুত ইনফৰ্মেল ডিছকাশ্যন ভাৰত চৰকাৰৰ লগত চলি আছে আৰু লাহে লাহে মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে বিষয়টো আমি শেষ পৰ্যায়লৈকে আনিছোঁ। কিন্তু সদস্যগৰাকীৰ লগত মই একমত যে মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট কষ্ট খাই আছে আৰু তাৰ লগত ময়ো একমত। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক বিৰোধিতা কৰি বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ বাহিৰত গৈ আধাৰ কৰ্তৃপক্ষক মই ক'লেও আধাৰ কেইখন দি নিদিয়ে। গতিকে বিষয়টোলৈ ফাইনেল কল উচ্চতম ন্যায়ালয়। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা আমি কিবা পাওঁ বা নাপাওঁ তাৰ আগতেও এই সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে ব্যাপক চিন্তা চৰ্চা চলি আছে আৰু মই কমলেশ পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ
যে এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে ৰাম ভক্তসকলে যদি কিবা সুবিধা পায় তাত যাতে আপোনালোকে বিৰোধিতা নকৰে। अभी जिनका भी बना हुआ नहीं है आधार कार्ड तो कैसे बना सकते हो। आपने सुना सीएम सर ने आधार बायोमेट्रिक के बारे में क्या बोला। आपको ऑलरेडी पता है कि असम में एनआरसी का प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए एनआरसी के कारण कुछ लोगों का एनआरसी के समय कुछ लोगों का एनआरसी में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। उन लोगों को आधार बायोमेट्रिक करने के लिए दिया गया था। जिन्होंने आधार बायोमेट्रिक किया उन लोगों का आधार कार्ड नहीं हुआ और कुछ लोगों का हो गया, जिनका अभी सरकार की तरफ से सुविधा दिया जा रहा है कि जो लोगों का आधार बायोमेट्रिक है, जितना भी आधार बायोमेट्रिक पीपल है असम में, उन लोगों को उन लोगों का बायोमेट्रिक कलेक्ट करके एक ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। उसको जमा करने के बाद सरकार कोई हाल उसके ऊपर निकाला जाएगा। अगर जो भी हाल उसके ऊपर निकाला जाएगा उसको जल्द से जल्द आधार कार्ड दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे कि सरकारी कोई भी बेनिफिट लाभ नहीं कर पा रहे, वो लोग एक बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर पा रहे और बहुत सारा प्रॉब्लम का फेस कर रहा है। अभी बात करते हैं किसको आधार कार्ड मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं एनआरसी में जिसका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन उनको भी आधार बायोमेट्रिक के कारण उनका आधार कार्ड नहीं हुआ था, और कुछ लोगों का आधार कार्ड में नाम नहीं है, उसका बायोमेट्रिक भी है, उनका भी आधार कार्ड नहीं हुआ। इसलिए उन लोगों का आधार कार्ड लॉक गवर्नमेंट की तरफ से लॉक किया गया था, अभी उसको ओपन नहीं किया। कोई भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर अभी तक नहीं है ओपन करने का, इसलिए वो लोग का आधार कार्ड अभी रुका हुआ है। इसका हाल जल्द से जल्द आपको मिलने वाला है। तो जो लोगों का एनआरसी में फाइनल लिस्ट में नाम आएगा उन लोगों को आधार कार्ड जल्दी प्राप्त होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू नूरटेक चैनल को देखने के लिए।